Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will be discussing lecture number 4, which is the design of T and L beams in Flexure. But before we begin our new lecture, if you have any questions in the previous lectures, you can ask your questions, please. Okay, if there are no questions, then we will go ahead. The topics to be addressed in today's lecture are Introduction to T and L beams, the ACI code provisions for T and L beams, design cases, design of rectangular T beam, design of true T beam in references. At the end of this lecture, students will be able to differentiate between T beam and L beam, explain mechanics of rectangular T beam and true T beam, and design T beam for Flexure. Sir, slide is visible. Let's take out. Okay, I hope you can see the slides now. Yes, sir, visible. So these are the topics to be addressed in today's lecture, and these are the objectives. Okay, introduction to T and L beam. If you remember, in the previous several lectures, we were discussing design of rectangular beam. The section of the beam was rectangular, okay, with a width B and depth, total depth equal to H. But in reality, in most of reinforced concrete structures, in almost all reinforced concrete structures, the shape of the beam, which you can see in this picture, will be either look like a T or L beam. This is an H beam, it will look like an L, which means some part of the slab will also be taken in the design of this beam. Okay, the beam itself, as you can see, is rectangular, but during the design, the part of the slab is also taken into account, because when the beam deflects, so part of the slab will also be compressed on the top side of the beam because it is monolithically cast with the beam. Therefore, T and L beam gets its name when the slab and beam produce the cross sections having the typical T and L shapes in monolithic reinforced concrete constructions. You would have seen in one of my animations in the beginning that the concreting in beams and slab is done at one and the same time, and the stirrups of the beam, they are projected into the slab, and the slab reinforcement passes through the reinforcement of the beam. So when concrete is poured in this shape of the formwork, after the formwork is removed, the shape of the section of the T beam will look like this, and the shape of the L beam will look like an English letter L and English letter T. Okay, and which means that part of the slab shall be taken as flange of the beam, because it will also be compressed into compression when the beam bends down. And in the case of T beam, there will be two sides of the beam, two sides of the slab. On each side of the beam, you will have a slab portion, so it will look like a T, English letter T. And when beam bends down, a part of the slab or flange will also be subjected to compression forces. So that part of the slab shall also be taken into account in the design of beam. This we will see later. Similarly, in the case of L beam, the slab extends only on one side of the beam, so this look like an inverted L. Okay, so part of this slab will also be
subjected to compression when the beam is subjected to some loads, and therefore part of the slab on one side of the beam in the case of L beam shall also be taken into account in the design of this beam. Okay, so in reality, almost all the beams of a reinforced concrete structures are either T or L beam with regard to the shape of the beam. If slab is also considered as part of the beam, if slab is also considered part of the beam, then the beam shape will be like T beam. If the slab extends on both sides of the beam, then it will look like an L beam if slab extends only on one side of the beam. So this is the explanation to why we call them as T and L beam. There will be no rectangular beam in a reinforced concrete structures, because in almost all cases, on top of the beam there will be a slab, and since slab will be calced monolithically with the beam, so the shape of the beam, if the slab is also considered as part of the beam, will look like TRL. Okay, this is the explanation to this. You can see the formwork in this multi-story building. You can see a T-beam here, where the slab extends on both sides of the beam. The formwork which is provided to this can be seen in this picture. You can see that these are the timber planes provided, timber sheets provided vertically to form shape of the beam, and then these are timber sheets provided horizontally in this case. When concrete is poured from top, this spaces will be filled. So this portion of the beam which is below the slab, this portion of the beam which is below the slab is usually in the field is called as hanging part of the beam. Hanging part of the beam. This is called hanging part of the beam, or also called technically as web of the beam. This is called web part of the beam, and the slab part, if it is considered as part of the beam, is considered as flange of the beam. Like in a steel structure, you would have seen a T steel section, where the top portion is called as flange, and the remaining bottom portion of the beam is called as web portion of the T section. So similarly, this part which is below the slab will be called as web technically, and practically the people in the field, they call this as a hanging part of the beam, and part of the slab is called a slab. Similarly, this is also a beam where the formwork is ready now for concreting, for pouring of concrete. The formwork is now ready. Okay, you can see these shapes, and practically the reinforcement will look like this. The reinforcement from the top will look like this. You can see that the beam stirrups have been projected into the slab portion, because from this timber sheet which is placed here, you can see this from timber sheet to this top of the stirrups. This is part of the slab. This is part of the slab. This portion is part of the slab. This portion is part of the slab. Okay, because when concrete is poured, so the concrete of the beam, concrete will flow into the beam formwork like this, in this portion. Okay, and when this part is filled, then the remaining concrete will be placed to form part of the slab. So this part of the beam, where you can see the stirrups, is actually part of the slab. This is part of the slab. So part of the beam stirrups will be projecting into the slab. Will be projecting into the slab. So this will make part of the slab to act together with the beam. When the beam bends down and the beam is subjected to gravity load, then when the beam bends down, so part of the slab will also bend along with the beam, because this portion of the beam, where the stirrup of the beam is projecting into the slab, makes the slab and beam monolithic. This
reinforcement makes the slab and beam monolithic. Okay, you can also see the top reinforcement, horizontal reinforcement of the beam is placed actually inside the slab. This because this part is part of the slab. So the reinforcement of the beam is actually such that the strips, part of the strip will be inside the slab, and the top reinforcement of the beam will be passing through the slab actually. And now you look at the slab reinforcement, the slab reinforcement is passing through the beam. The slab reinforcement is passing through the beam. So when concrete is now poured inside this beam formwork, and when the beam formwork part is filled with concrete, then the remaining concrete will be placed in this portion, of the beam, and also this will flow to the part of the slab. And in this manner, the slab and beam will become monolithic. Monolithic means that they will act together. Whenever the beam is subjected to load or whenever the slab is subjected to load, so this effect of the load will be also transmitted to the beam or vice versa. When the beam is subjected to load directly, part of the load will be taken by the slab. And when slab is subjected to load, part of this load will also be taken by the beam. We will see the behavior, how this behavior is actually affecting the design of beam. In casting of reinforced concrete floors or roofs, forms are built for beam sides, the upper side of slabs. Forms are built for beam sides. These are beam sides. The underside of slab, this is the underside of slabs. And also this is the underside of slabs. And the entire concrete is mostly poured at once from the bottom of the deepest beam to the top of the slab. You can also see in this picture that the concrete will be poured. Concrete will flow, actually, when concrete is poured in the slab, the concrete will flow to the formwork, which is provided for beam. And then when this part is filled, when beams are filled, then concrete will flow to the other part of the slab and it will complete concreting in the slab. The behavior, if you look at the behavior, I will show you this animation. We'll also be able to see that slab and beam, they bend together. When slab, because actually in the structures which are built, slabs are loaded. When slab is loaded, you can see that slab and beam, they will bend together. So if you look at the deformed shape of the slab, if you look at this slab now, the beam bends, but the slab, part of the slab also bends along with the beam. Now, this slide is important to understand what happens when slab is taken as part of the beam. What are the effects on the design of beam? Okay, if you look at this beam where the slab is also projecting on both sides of the beam, okay, in all this beam. And when a section of the when a section is AA is taken on this midspan of the beam, you will see part of the web and also part of the slab. Section BB will also see part of the beam and part of the slab. Okay, the typical bend moment diagram for this case will be when the beam is subjected to uniformly distributed load, will be a positive bending moment, and then a negative bending moment at the midspan. You would have drawn several times bending moment like this, and then you have positive bending moment in zero, positive and negative, and then positive and zero bending moment. Okay, so in the case of a positive bending moment, now you know that in the case of positive bending moment, what happens? In the case of positive bending moment, tensile stresses are produced in the bottom of the beam, bottom side of the beam, or web part of the beam, extreme bottom of the beam. And compressive stresses will be produced in the top side of the beam. And the top side of the beam in this case is also some part of the slab, as you can see in this section. Okay, so the bottom side, if you take a section AA, the beam will look like this, because part of the slab is also part of the beam. In this case, beam extends, the slab extends on both sides of the beam. So when we say that the top portion of the beam is subjected to compressive stresses,
So it means that it is the slab which will be subjected to compressive stresses, because slab is placed on the top side of the beam. Slab is on the top side of the beam. Okay. So when slab is on the top side of the beam, then compressive stress will be produced on the top side of the beam. In this case, when section A is taken. When section BB is taken, in the case of section BB, the bending moment diagram is negative bending moment. It is a negative bending moment diagram. And in the case of negative bending moment, you can see that tensile stresses are produced in the upper fiber of the beam. Tensile stresses are produced in the upper side of the beam, and compressive stresses are produced in the bottom side. So when we say that tensiles are produced in the top side of the beam, it means that the slab and some part of the beam they are subjected to tensile stresses, and the bottom side of the beam is subjected to compressive stresses. So this part of the bottom side or lower side of the beam is subjected to compressive stresses, and the top is subjected to tensile stresses. Now these two situations are quite different than one another. In situation number one, when at the midspan, when bending moment is positive, and tensile stresses are produced in the bottom side of the beam, and compressive stresses are produced in the top side of the beam, the flange of the beam, which is actually the slab, is in compression, and the web portion is in tension. But at section BB, where the bending moment diagram is negative, in the case of negative bending moment, the top portion of the beam is in tension, and the bottom portion is in compression. So which means that the slab and part of the beam, they are in tension, and the web part is in compression. I hope this is clear. If not clear, you can ask your questions, because this is very important to understand. Any question? Okay. As we discussed in the previous slide, that in the analysis and design of floor and roof system, it is common practice to assume that the monolithically placed slab and supporting beam interact as a unit in resisting the positive bending moment. As shown, as we discussed in the previous slide, the slab becomes the compression flange, while the supporting beam becomes the web arch stem. So this part is in the case of positive. This is the case of positive bending moment, that the web part is in tension, and the slab part, which is called as flange part, is in compression on section AA. In the case of negative bending moment, the slab at the top of the stem or web will be in tension. The slab part will be in tension, while the bottom of the stem will be in compression. This usually occurs at interior support of continuous beam. Okay, now the question is that how much part of the slab will be taken as effective in resisting this compression or compressive stresses, because some part of the beam, some part of the slab, as we discussed in the previous slide, on both sides of the beam in the case of T, and one side of the beam in the case of L beam will also take part in resisting the compressive stresses. So how much part of the slab will be effective in resisting this compression stresses is now given to us by the ACI code. For T and L beam supporting monolithic or composite slabs, the effective flange width BF, effective flange BF, shall include the beam web width BW, beam width plus an effective overhang flange width in accordance with ACI 318 table 6.3.2.1. So in the case of T, it will be BW plus some portion of the slab. In the case of L, it will be BW plus part of the slab. In the case of T, it will be BW plus part of the slab on both sides. So we will see from the table 6.3.21 in the next slide. In the case of T beam, total BF, which is the flange width in the case of T beam, will be taken as BW plus 16 HF, which means that let's say the beam is 12-inch wide and the beam is 6-inch deep, slab is 6-inch deep.
then the total BF will be BW12 plus 16 multiplied by 6. This will be the flange which will be effective in in resisting the compressive stresses. OR, BW plus SW, where SW is distance, clear distance between the two beams, whether T or L, but this is the distance between two in a system. If there is a system of slab and beam, then the distance between the two beams, it will be SW. And BW plus Ln divided by 4 is the third equation for this. BW is width of the beam and Ln is the length of the beam. If this beam extends in this manner, like this, so the length of this beam, clear length of the beam from support to support, will be taken as Ln. And out of these three equations, the least of these values will be selected as BF. The least value will be selected as BF. Okay. Okay, there is a note on this slide also that in ACI 318, H is used for slab thickness, while in ACI 318-19, H is used for beam depth. However, in this lecture, for differentiation between beam depth and slab thickness, HF will be used to denote slab thickness, HF. In the case of L beam, the equation is slightly changed from BW plus 16 HF, it is BW plus 6 HF. And for BW plus SW, it is BW plus SW divided by 2, and BW plus Ln divided by 4, it is BW plus Ln divided by 12. So from this, we will calculate the flange width, BF, in the case of T and L. The least value will be used in both the cases. Now the design cases, we will discuss the design cases. In designing a T-beam for positive bending moment, there exist two conditions. Case number 1. When the situation is such that the depth of the compression block is less than the depth of the compression block may be less than or equal to the slab depth. A is less than or equal to HF. If A, this compression block depth, is less than HF, then which means that the slab compression block, the compression block depth is within the slab. But if A extends into the beam web, then the shape of the compression block will be like a T, not a rectangle. Okay, in case number 1, as I said earlier, you should pay attention to this, that if the depth of the compression block is less than or equal to the slab depth, this is the compression block depth, small a. If the compression block depth is less than or equal to the slab thickness, then the shape of this compression block will be like a rectangle. Okay. Then the T-beam will be designed as a rectangular beam with only difference that BW in the previous equations of rectangular beam will be replaced by BF. All the equations will be adjusted or modified such that BW, which was width of the beam of rectangular beam, will be replaced by BF. Okay, but mind that this is only the case of positive bending moment, not in the case of negative bending moment, because in the case of positive bending moment, the compression is in the top portion of the beam and the tension is in the bottom portion of the beam. In the case of negative bending moment, as I said earlier, that the top portion of the beam will be subjected to tension and the bottom portion will be subjected to compression. So in the case of positive bending moment, if the compression block depth A is such that we will calculate this if it is within the slab, if it is within the slab or equal to even the slab thickness, then the shape of this green color, which is basically the compression part, will be rectangular, and then the beam will be designed as rectangular. Although the shape of the beam is T, the design will be like that of rectangular, but the only difference that W will be replaced by BF, as you will see in the examples. However, again, in the case of positive bending moment, if small a depth extends to the web portion, then the shape of the compression block is also T, and the shape of the beam itself is also T.
So this will be called is that when the compression block over the flange and cover the flange and extend into the web. In such a condition, T-beam is designed as true T-beam. Why true T-beam? Because the shape of the beam itself is true beam, is also true beam, and the shape of the compression block is also T-beam. Okay, so this T-beam will be designed as T-beam, which means that the T-beam will be designed as true T-beam. Okay, true T-beam. In the previous case, the shape of the beam is T, but the shape of the compression block is rectangular. So in this case, T-beam will be designed as rectangular. So we don't call this as T-beam will be designed as true T-beam. But in this case, the shape of the beam is also T, and the shape of the compression block is also T. So T-beam will be designed as T-beam. T-beam will be designed as T-beam, and usually we call this as T-beam design as true T-beam. True T-beam. Now look at the case 1. When A, the compression block depth is less than the slab thickness, then what are the equations and how the equations are modified? You know from the previous several lectures that there will be two equations. Summation of fx is equal to 0. So 0.85 C prime A BF. In the previous case, this equation was 0.85 C prime A times BW, because the beam was rectangular. In this case, the top portion is this one. So this part, the green part, is in compression. The area of this compression block will be multiplied with the 0.85 C prime. 0.85 C prime is stress, and A times BF is the area subjected to compression. A is this compression block depth, A, and BF is the width of this rectangular compression block, and BF can be calculated from the previous equations as we have discussed. So this BW has been replaced by BF. This is one difference. Small a can be calculated now from this equation as ASFY divided by 0.85 C prime BF. Okay, for the bending moment, we can write down nominal moment is equal to T into LA, which is ASFY d minus A by 2, and phi Mn is equal to phi ASFY d minus A by 2, and we can calculate AS is equal to MU divided by phi FY d minus A by 2. So if you look at the two equations, there is only one difference from the previous rectangular beam design discussed in the previous lectures. Only BF, only this BF has been replaced. Okay, previously there was BW, or only B, width of the beam, and now this has been replaced by BF because the slab is also considered as part of the beam, as we have discussed in the previous slide. So when slab is considered as part of the beam, the slab portion, if slab portion only is in compression, then the compression block shape will be that of rectangular, and A times BF will be multiplied with this. So this is the only difference. BF is the only difference. All the other checks remain the same as for rectangular beam design. However, there is only one note, that for the calculation of AS and AS minimum, we will use BW and not BF. Okay. So all equations remain the same as we would use in the previous case of rectangular beam, except that this BF will be used instead of BW if compression block is within the slab. So now we will, please. सर पिछले स्लाइड में पाई mn और mn क्या है जी सर? ये mn और पाई mn ये मोमेंट्स में ये क्या है सर? मैं बताता हूँ. हमने जो पहले डिस्कशन की थी ना बीम के डिरिवेशन में, तो आपको याद होगा कि कंप्रेशन ब्लॉक ऊपर बन जाता है, तो आप समझते हैं ना? ये समझते हैं आप? यस सर. और अगर आप इसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करें तो स्ट्रेस डायग्राम में हमारे पास ये जो है इधर इसका 0.85 C प्राइम होता है, ये पोर्शन, ये कंप्रेशन स्ट्रेस जो होता है, ये कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ है, और पार्ट ऑफ द बीम अगर हम बीम ड्रा कर लें इस तरह से, तो हमारे पास ये पोर्शन एक्चुअली कंप्रेशन में होता है, लेकिन हम कहते हैं कि इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो ये पोर्शन हमारे पास
होता है असल में। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ए है एक्चुअली, और ये बीम की विड्थ है अगर रेक्टेंगुलर बीम हो, और ये बीम की डेप्थ है टोटल एच। प्रीवियस में केस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो इसमें आपको पता है कि सी मस्ट बी इक्वल टू टी, ये तो पता है ना आपको कि सी टी के बराबर होना चाहिए। सी हम कैसे मालूम करते हैं? सी इज ए फोर्स, यू नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ए। तो इससे अगर हम पी मालूम करें तो पी होगा एस मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है। इस केस में ये सी जो है ये पी है, असल में कंप्रेशन फोर्स है। तो दिस कंप्रेशन फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। स्ट्रेस इसमें कितना है? 0.85 सी प्राइम है, कंक्रीट के ऊपर बीम पोर्शन में स्ट्रेस 0.85 सी प्राइम है और यूनिफॉर्म है। और ये आपको पता है कि हमने इसको एज्यूम यूनिफॉर्म किया था विटनेस ब्लॉक के जरिए से, मल्टीप्लाई बाय द एरिया इन कंप्रेशन। तो एरिया इन कंप्रेशन क्या है? ये विड्थ है, बीम की विड्थ ये है, और कंप्रेशन ब्लॉक की डेप्थ ये ए है। तो ये हो जाएगा ए टाइम्स बी डब्ल्यू। और टी जो है, टी एरिया ऑफ स्टील है, तो ये भी फोर्स होगा एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, इस केस में ए एस इंटू एफ वाई। तो ये ए एस एफ वाई हो जाएगा। इससे आप ए निकालते हैं, आपको याद आ गया? हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू नो दिस। अच्छा, अब अगर मैं इसको टी बीम के साथ कंपेयर करूं तो ये बी डब्ल्यू जो है, ये चूंकि इसका पार्ट जो है फ्लेंज यानी स्लैब में भी इसको हम कंसिडर करते हैं, तो ये पार्ट जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। और अगर ये इसकी जो विड्थ है, डेप्थ है इस कंप्रेशन ब्लॉक की, अगर ये विद इन द स्लैब है तो जाहिर है इसका ये ए होगा और ये बी एफ हो जाएगा। तो ये ए तो ए रहेगा, लेकिन बी डब्ल्यू जो है ये चेंज हो जाएगा बी एफ के साथ। ये इट विल बी चेंज टू बी एफ इन द केस ऑफ टी बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। यस सर। बी डब्ल्यू सिर्फ बी एफ से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी आप एम एन की बात कर रहे हैं, तो एम एन असल में ये नॉमिनल बेंडिंग मोमेंट है जो रिजेस्ट कर रहा है आपके अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट को। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट एम यू है जो कि लोड प्रोड्यूस कर रहा है और लेंथ ऑफ द बीम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये बीम की लेंथ है और आप इसको लोड करें तो यू विल हैव ए बेंडिंग मोमेंट। इसको अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट हम कहते हैं, जिसको हम एम यू लिखते हैं अगर आप फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दिस केस इट विल बी इक्वल डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई 8। और किसी भी बेंडिंग के लिए आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं या इक्वेशन से मालूम करें। वो एम यू ये अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है। दिस अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट विल बी रेजिस्टेड बाय दिस कपल व्हिच इज टी एंड सी। तो कपल के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये आपको बेंडिंग मोमेंट देगा, टी मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म और सी मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। लेकिन सी तो हमारा मसला नहीं है क्यों, बिकॉज द कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, सो विल यूज टी टाइम्स एल ए टू रेजिस्ट दिस एम यू। इस एम यू को रेजिस्ट करने के लिए, ताकि आपके पास जो लोड आ रहा है उससे अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट पैदा हो रहा है। उस अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में नीचे टेंशन और ऊपर कंप्रेशन आ रहा है। ये आपस में भी बैलेंस होने चाहिए। अगर ये बैलेंस ना हो तो बीम टूट जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो बीम टूट जाएगा, ठीक है। और ये एक दूसरे के बराबर भी होने चाहिए। और प्लस ये है कि जो ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है, ये कपल इस डायरेक्शन में, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। अगर ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट है जो एम एन की शक्ल में हम लिखते हैं नॉमिनल मोमेंट, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन एम यू, देन द बीम विल फेल। तो इंटरनली बीम जो इसको जिस तरह रेजिस्ट कर रहा है, इंटरनली बीम की इंटरनल बॉडी ऑफ द बीम, तो ये उसकी इक्वेशन है जो हमने इस तरह लिखी है, टी इंटू लीवर आर्म। इसको हम नॉमिनल मोमेंट कहते हैं विदाउट फैक्टर्स। तो दिस विल बी एम एन इज इक्वल टू ए एस एफ वाई into d minus a by 2. You know how this d minus a by 2 is written. This is called a nominal moment without factor. Without factor, this resisting bending moment without factor phi is called as nominal moment, because this moment is given to us by area of steel, which will be calculated from the equations, and Fy is the yield strength, which is called specified yield strength, and d is called specified size of the beam. It's called nominal bending moment, which is actually the resisting bending moment, okay, given to us by this couple T times LA. And when this Mn is now, this according to the ACI code, ACI code says that phi times Mn, reduce this Mn by phi, which they call as design resisting bending moment.
MD is design resisting moment. Bending moment is equal to 5 times Mn, and 5 times Mn is 0.9 times Mn. 0.9 times Mn. The ACI code now says that this 5 Mn design resisting moment shall be greater than or equal to 5 Mn shall be greater than or equal to, at least it should be equal to Mu. At least it should be equal to Mu. This Mu is the applied bending moment. And now if we substitute this phi ASF yd minus a by 2 for Mn, then from this AS can be calculated as what? AS is equal to Mu divided by phi FYD minus a by 2. Okay? Where Mu is the applied ultimate bending moment or factor bending moment, and Mn is the nominal bending moment as we have written in this equation. Is it clear now? Yes, sir. Any other question? Okay, let's see the example. There is one example now. Look at the example carefully, and then I would like that you solve this example yourself and give me your feedback within 10 minutes. You can discuss it among yourselves if you access to other students. Look at the statement of, listen to the statement of this example carefully, and then you can, I hope this is very easy, you can solve this example yourself. There is a roof of a hall which is 5-inch thick slab with beams having 30 feet center to center and 28.5 feet clear length. The beams are having 9 feet clear spacing and have been cast monolithically with slab. Overall depth of beam including slab thickness being 24-inch and width of the beam web being 14-inch. Calculate the steel reinforcement area for the simply supported beam against a total factored load including self-weight of the beam of 3 kg per foot, FC 3 kSi and Fy 60 kSi. Actually, this situation is like this. I will try to make a 3-dimensional picture of this. And then it extends like this. Extends. Okay, this is in the 3D, it will look like this. I hope you can now understand this. In 3D, it will look like this. It extends also in this. Okay, so this is slab part. The slab part in this example is given as 5-inch thick. This is 5-inch. The beams are having 9 feet clear spacing. So it means the distance between this beam and this beam is 9 feet. And also, there will be another beam on this side, which will be a T beam, let's say, or L beam, depending on the spans, okay, of the slab. So it will be 9 feet. Again, there will be another beam on this side. Again, it will be 9 feet. There will be a beam here like this. So 9 feet, 9 feet. Okay. Overall depth of beam including slab thickness. Overall slab thickness including slab thickness. You should look at this carefully. Overall depth of the beam including, which means that from this part to this, total slab thickness is 24 inch. So how much is the hanging part? How much is the hanging part? 14. 14. It is total is 24 inch. 24 inch. 24 minus 5 inch. 5 inches slab. 19, sir. This is 19 inch, and you have 5 inch. You should very carefully read the statement of the problem. This is 24 inch from the top of the slab to bottom of the beam, because overall depth of the beam including slab thickness being 24 inch. So this total is 24 inch. And the beam, with beams having 30 feet center to center. So it means 30 feet center to center means in this part, and this is this distance.
The beam is supported, all these beams are supported on this side, for example, let's say on a wall, and also on the other side on the wall. So this is the length of the beam or the span of the beam. Okay, I hope you understand this. The beam, the distance between the beams is 9 feet, but the length of the beam, the length of the beam is 30 feet. Okay, the length of the beam is 30 feet. From this, there'll be support here. Let's say in the case, let's say there is a wall here and there is a wall on the other side. So the beam from this wall to that wall is 30 feet. The width of the beam is 14 inch. The width of the beam, this is 14 inch. This is 14 inch. You are required to calculate the steel area for simply supported. This is simply supported beam, so you can use MU is equal to WUL square by 8. Okay, and since it is simply supported beam, so you will have only positive bending moment at the midspan, maximum positive bending moment at the midspan. So this will be designed as T beam because in the case of positive bending moment, the bottom of the portion will be in tension, and the top of the portion will be in compression. And as you know now, the top of the portion consists of part of the slab. So which means that part of the slab will be in compression in the top side of the beam, and the bottom portion will be in tension. Okay, so this will be like the design will be like a T beam, and you will check whether the flange width A is within the compression block depth A is within the flange depth or slab depth or not. So anything else if it is not clear? Excuse me, sir. सर ये clear length का जरा बताएं सर, clear length का. क्लियर लेंथ होता है कि ये आप अगर बीम के इस केस में देखूं मैं तो बीम का ये एज जो है इंटरनल और इसका ये साइड जो है इसके दरमियान को क्लियर कहते हैं, यानी एज टू एज, सेंटर टू सेंटर नहीं. अगर ये सेंटर टू सेंटर में ले नहीं तो इस सेंटर से सेंटर तक होगा, बीम के सेंटर से, लेकिन बीम के सेंटर से नहीं. इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस बीम एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस बीम. इस तरह के मैं कहता हूँ कि क्लियर साइज ऑफ ए रूम, तो इसका मतलब इंटरनल साइड ऑफ द रूम होगा, सेंटर ऑफ द वॉल से सेंटर ऑफ द वॉल तक नहीं होगा, बल्कि इंटरनल साइड ऑफ द वॉल टू अदर इंटरनल साइड ऑफ द वॉल, इसको क्लियर कहते हैं. Okay, sir. Thank you, sir. Anything else? अच्छा, अब देखिए जरा इसको एक दो स्टेप्स मैं आपको बता कराता हूँ. Span length is 30 feet. As I said earlier, this will be extending in this direction, and there will be one support here, another support on the other side. The length of this beam is 30 feet. And the clear length is like, for example, if I draw this portion now, this portion of the beam, so there will be, let's say, a wall here, and then you will have a, so you will see two lines actually, one for slab and the other for beam. But I have drawn only bottom of the beam and top of the top portion. This top portion is actually, this line is for slab. So if this is a wall here, this is the clear length, which is 28.5. And from center to center, center of this wall to center of this wall, it is 30 feet. So, which means that, what is the width of the wall? Width of the wall is how much? If center of this 9 wall, inches, sir. the width of the wall is 18 inch. Because if this is 18 inch, then from center this will be 9 inch to center of this. And from center of this it will also be 9 inch. And 9 inch plus 9 inch will be 18 inch. 18 inch, 1.5 feet to 28.5. This will give you 30 feet. The wall thickness total, the total wall thickness is 18 inch. But from the center of this wall to the center of this wall, 9 inch from one side of the wall and 9 inch from the other side of the wall will be added to this 28.5 feet. I hope this is clear now. ठीक है?
मैं एक दफ़ा ज़रा फिर इसको ड्रा करता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं। एक दीवार है जिसके ऊपर बीम जा रहा है इस तरह से, दीवार भी इस तरह एक्सटेंडेड है, नीचे आ रही है दीवार। तो ये डिस्टेंस जो है इधर से लेकर इधर तक ये 30 फीट है। दीवारों की अपनी थिकनेस अगर गिवन नहीं है, लेकिन वो हम इससे निकाल भी सकते हैं। ये 18 इंच है, ये भी 18 इंच। तो जब टोटल 18 है तो इसका मतलब है कि ये 9 इंच हो गया, ये भी 9 इंच हो गया, इस तरह से ये 9 इंच और ये भी 9 इंच। तो अगर हमें क्लियर लेंथ मालूम करना, जिस तरह के मैंने आपको कही, क्लियर इसको कहते हैं, क्लियर दिस वन, हम मालूम भी कर सकते हैं कि 30 माइनस 9 इंच इधर से माइनस करेंगे और 9 इंच ये माइनस करेंगे। 30 में से 9 इंच अगर एक साइड पे माइनस करे और 9 इंच साइड पे माइनस करे तो 28.5 हो जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, अगर आप इसका सेक्शन एक ले लें ना, सेक्शन इस बीम का, तो बीम का सेक्शन आपको कैसा नजर आएगा? इस बीम का सेक्शन आपको ऐसे नजर आएगा, ये वेब पार्ट होगा और ये स्लैब पार्ट होगा। और ये दोनों साइड पे इस तरह से जाके कहीं पर ये आखिरी बीम होगा इधर, और इधर से इस तरह से इधर भी कोई बीम होगा या ऊपर आगे एक्सटेंड होता है, जैसे हमें उसका पता नहीं है। लेकिन हमने चूंकि एक बीम डिजाइन करना है तो हम ये वाला बीम, ये पोर्शन ऑफ द बीम जो है हम इसको इस वक्त ले रहे हैं, जिसको मैंने इधर ड्रा किया हुआ है कि एक सपोर्ट से लेकर दूसरे सपोर्ट तक इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर ये इधर सपोर्ट हो और उधर सपोर्ट हो, ठीक है, तो ये तमाम, इसका मतलब है कि तमाम बीम्स जो हैं ये सपोर्टेड हैं एक साइड पे और इस तरह तमाम बीम दूसरी साइड पे। लेकिन हमने जो बीम डिजाइन करना है वो ये बीम है, जिसके दरमियान, बीम्स के दरमियान जो फासला है बिटवीन द टू बीम्स वो तो 9 फीट है, लेकिन बीम का अपना जो डिस्टेंस है फ्रॉम वन सपोर्ट टू अनदर सपोर्ट ये इस तरह है 28.5 फीट है। अब ये आप बात समझ में आ गई कि नहीं? इस तरह कमरे की दो दीवारें हों ना, कमरे की दो दीवारें हों और उन दोनों दीवारों के दरमियान आप बीम जो हैं लगा दें, 28.5 फीट बीम आप लगा दें और उसके दरमियान, और आपका कमरा इतना बड़ा हो कि उसमें 3-4 बीम्स आपको डालने पड़ जाएं और बीम के दरमियान फासला 9 फुट हो, क्लियर, और बीम का अपना जो स्पैन है या लेंथ है, लेंथ ऑफ द बीम, वो एक दीवार से दूसरी दीवार तक जो है वो 30 फीट है, लेकिन दोनों बीम्स के दरमियान जो फासला है वो 28.5 फीट है। यानी अगर इसको मैं कि प्लेन में ड्रा करूं इन ए प्लेन तो ये इस तरह से होगा। ये अगर एक कमरा है, ठीक है, और इसमें ये बीम्स हैं, ये बीम्स, ठीक है। अब अगर इसका मैं एक सेक्शन ले लूं, इधर से मैं एक सेक्शन ले लूं तो आपको ये एक दीवार इधर से नजर आएगी, फिर ये बीम नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ये पूरा सेक्शन इस तरह ले लूं तो एक दीवार इधर होगी, फिर बीम, फिर बीम, फिर बीम, फिर बीम, और ये, तो इन बीम के दरमियान फासला 9 फुट है, क्लियर। और ये जो दीवार है, इस दीवार तक, इस दीवार से इस दीवार तक का जो फासला है, ठीक है, ये दीवार जो है, इसको अगर आप इस तरह ऐसे काट दें इस बीम को, तो आपको ये बीम इस दीवार से उस दीवार तक इसका फासला 28.5 क्लियर है। अब जो है ना, हमने ये दीवार डिजाइन, हमने ये बीम डिजाइन करना है, ये वाला बीम जो है, ये बीम, बाकी बीम हमने इस बीम पे हमने डिजाइन करना है, ये बीम जिसके ऊपर हमें लोड वगैरह सारे गिवन है, हमने सिर्फ ये बीम डिजाइन करना है। इसका अगर आप सेक्शन ड्रा करें इस बीम का, तो आपको ये बीम जो है सेक्शन में ऐसे नजर आएगा कि कुछ पोर्शन ऑफ द स्लैब एक साइड पर, कुछ दूसरी साइड पे इस तरह से आपको नजर आएगा। ये सेक्शन आप इधर से लेंगे,
और अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे ऐसे देखेंगे तो फिर आपको इधर एक दीवार नजर आएगा और एक दीवार, और फिर ये बीम इसके ऊपर पड़ा होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जब सारा डेटा आपके पास आ गया तो व्हाट इज डिफिकल्ट? द डिफिकल्ट इज टू जस्ट टू कैलकुलेट द फ्लेंज विड्थ, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है जो पहले आप लोग करते आ रहे हैं। हमें इसमें जो लोड, अल्टीमेट लोड डायरेक्टली गिवन है, और अल्टीमेट लोड अगर आप इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, including self weight of the beam against a total factor load of 3 kg per foot। इसका मतलब है कि सेल्फ वेट इसमें शामिल है ताकि आपको लिए ये प्रॉब्लम आसान हो जाए। तो उसके लिए लिखा है कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम इसमें इंक्लूडेड है, और WU जो है एक्चुअली वो 3 kg पर फुट है। ठीक है, इसमें सेल्फ वेट आपने शामिल नहीं करना। अगर आप इसको आप देखें तो WU हमारे पास 3 kg पर फुट है, और टोटल डेप्थ ऑफ द बीम इज 24 इंच। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक 24 इंच है टोटल। नीचे जो आपके पास 19 और 5 इंच, और 2.5 इंच हमने वाई बार लिया हुआ है। आपको पता है अब वाई बार, व्हाट इज वाई बार, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस स्लाइड। एज्यूम हम करते हैं 2.5 इंच, तो आप डी इफेक्टिव एज्यूम कर लेंगे। BW आपको गिवन है, स्लैब थिकनेस पॉइंट भी गिवन है। अब आप टी बीम के लिए जो 3 इक्वेशन हैं ACI कोड के, दे आर BW + 16 HF, BW + SW एंड BW + LN/4। 16 HF स्लैब थिकनेस है, BW क्या है? BW width of the beam, so 14 + 16 × 5, 94 inch। BW + SW is the distance between the two beams, which is 9 feet। BW + SW 14 + 9 to 12, 122। Length of the beam, clear length of the beam divided by 4, BW + LN, clear length 28.5, which is 99.5 inch। So ये आपको 94 इंच कम से कम आ, तो इसलिए आपका BF 94 इंच हो गया। अब इधर तक तो मैंने कर लिया, अब आगे आप खुद करें। आप एस निकालें, मुझे एस बताएं कितना है मैक्सिमम एस मैक्स, एस मिनिमम और एस भी बताएं। आई विल गिव यू 10 मिनट्स एंड यू कैन डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स। आप ट्रायल करें बस, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन एज्यूम ए, मैं आपको हिंट देता हूं। आप इसमें ए एज्यूम करें, लेट्स से यू एज्यूम ए इक्वल टू 5 इंच। ठीक है, इस 5 इंच के बेस पर आप एस निकालें। एस इज इक्वल टू MU डिवाइड बाई 0.9 इंटू 60 इंटू D - A/2। ठीक है जी, और फिर आप इस ए से दोबारा आप ए निकालें, इक्वेशन में से ए निकालें। इक्वेशन में ए क्या है? ASFY डिवाइड बाई 0.85 C प्राइम, बट BF नॉट BW, BF, ये BF आपने इस्तेमाल करना, 94 इंच। इससे आप ए मालूम करें। अगर ये ए आपका एज्यूम ए से कम आ गया तो यू विल डिजाइन दिस टी बीम, विच इज अ टी बीम, बट दिस यू विल डिजाइन दिस एज ए रेक्टेंगुलर बीम। तो आपने मतलब क्या, व्हाट विल बी द चेंज? देयर विल बी नो चेंज। यू विल कैरी ऑन योर ट्रायल एंड सक्सेस स्टेप्स एंड फाइनली यू विल कैलकुलेट AS। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप स्मॉल ए इनिशियली एज्यूम करें स्लैब थिकनेस के बराबर, 5 इंच के बराबर, और उससे आप AS निकालें। इस AS से दोबारा आप स्मॉल ए निकालें, और आप देखें कि स्मॉल ए इस 5 इंच से कम है या इसके बराबर है, तो आप इसको कंटिन्यू करें एंड यू राइट दैट दिस टी बीम विल बी डिजाइन्ड एज ए रेक्टेंगुलर बीम बिकॉज़ द शेप ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक विल बी रेक्टेंगुलर। तो जब शेप ऑफ द कंप्रेशन ब्लॉक किस सूरत में रेक्टेंगुलर होगा? जब स्मॉल ए की वैल्यू स्लैब थिकनेस के बराबर हो या उससे कम हो तो ये रेक्टेंगुलर होगा। अगर ये इससे ज्यादा हो तो ये इधर आ जाएगा और कंप्रेशन ब्लॉक का जो शेप है वो टी हो जाएगा। तो ठीक है ना, आप इसको ए 5 इंच एज्यूम करें और AS निकालें, मुझे बताते जाएं कि AS कितना निकला है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं।
MU3 की परफेक्ट आपको गिवन है, पहले आप MU मालूम करें। MU is this value WUL square by 8, L इसमें सेंटर टू सेंटर आप लेंगे 30 स्क्वायर से, तो 4050 इंच के आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। पहले आप स्मॉल ए ज्यूम करें 5 इंच, फिर आप एस निकालें, ठीक है जी, आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रायल से हमारे पास ए 3.94 स्क्वायर इंच आ रहा है, ठीक है जी। एंड देन इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ AS इन दिस इक्वेशन, A is equal to ASFY, तो इसमें हमारे पास स्मॉल 8.98 इंच आ रहा है, जो कि स्लैब थिकनेस 5 इंच जो हमने ज्यूम किया था उससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि दिस T beam will be designed as rectangular beam,
इसका मतलब ये है कि आप ट्रायल्स को कंटिन्यू करें। अब स्मॉल ए की वैल्यू 0.9 इंच डाल के दोबारा एस मालूम करें। जिस तरह ये है स्मॉल ए, तो हमने 0.98 इंच की वैल्यू इधर डाली हुई है और इससे दोबारा हमने एस मालूम किया 3.5 स्क्वायर इंच। नेक्स्ट फाइल में आप नेक्स्ट ए एस 3.56 से ए एस दोबारा स्मॉल ए दोबारा मालूम करें तो 0.89 इंच आ गया। देन अनदर ट्रायल ए एस, तो अब ये ए एस और प्रीवियस जो आपका ए एस दे रिमेन द सेम, तो हमारे पास ए एस 3.56 स्क्वायर इंच आ गया। यू कैन आल्सो कैलकुलेट नाउ नंबर ऑफ बार यूजिंग नंबर 8 बार। 3.56 divided by 0.8 is 4.45, so say 5 bars, यानी 5 बार्स आपको नंबर 8 के इसमें डालने पड़ेंगे विद ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द बार्स। ये तरीक़ेकार है एक टी बीम डिज़ाइन का, जिसमें आप पहले स्मॉल ए विल बी assumed equal to the slab thickness, and then AS will be calculated based on this assumed A, and then once A is calculated, this AS will be substituted in the equation for A is equal to ASFY divided by 0.853 prime BF. You should remember this BF, flange but not BW. And A will be calculated, and this A will be compared with the assumed A in the step number 1, which was equal to the slab thickness. If this A calculated comes out to be less than assumed small a, which is equal to HF, then the beam will be designed as, although the shape of the beam is T, it will be designed as a rectangular beam, which means, I am saying again and again, that there will be no difference. You have to do nothing except to continue the trials. You will continue the trials, but mind that you will use BF instead of BW in your next trials. Okay, and then the value which no more changes will be taken as the final value of AS. Okay, and then number of bars can be calculated. Obviously, AS maximum and AS minimum shall be also checked after this AS is calculated. AS minimum is 3 times FC prime divided by F by VW, and 200 divided by greater of these two shall be taken. Greater of these two, I explained in the previous lecture that 200 divided by F by VWD will give you more area of steel than this equation, as long as FC prime is less than 4500 psi. So AS minimum is 1 square inch, and AS maximum is 4.06 square inch. AS calculated from the previous is 3.56 square inch. 3.56 is less than AS maximum and more than AS minimum, so this value is okay. Now the value which is actually used is 4 square inch, because we have used 5 bars, 5 into multiply by 0.8. Actually the area is now 5 bars. You know that the area of 1 bar is, so this value is slightly less than the maximum value of AS, which is correct, which is okay. The maximum value is 4.04, 4.06, and 4 square inch is less than this, so this is okay. You can also try some other bar, let's number 6 bar. You can try number 6 bar. You can use number 6 bar in multiple rows. Any question about this? Any question now, please? Any question? No, sir. Okay. This is the final arrangement for this T-beam. Okay, now let's move ahead to another scenario. This is a class activity, and you can try this class activity right now or later.
This is a case. You can see these are beams. This is beam, one beam. This is another beam, another beam. 3 beams are running. This is the length of the beam. The beam is continuous past this support. Beam is continuous past this support. So if you draw a bending moment diagram for this beam, you will have a positive bending moment and then negative bending moment, positive and negative. For this BB1, negative, positive, positive. The bending moment diagram has been drawn. You are required to design this beam. So you will design this beam for positive bending moment as well as for negative bending moment. In the case of positive bending moment, you will design this. You will treat this beam as T beam, and then you will assume small a and repeat the process that we have just discussed in the previous slides. And then for the negative bending moment, there is no need of BF because the flange is in tension and tension part is also is already ignored. So we will treat this beam as exactly a rectangular beam with B equal to BW, not BF. You can try this yourself. Next is the flexure capacity of a T beam. If beam is, shape of the beam is T and the compression block depth is also T, you can see that A now extends into the web proportion. The shape of the compression block, the green area is area consisting of 2 rectangles, one this rectangle and another this rectangle. So this shape is like a T. Okay, we can split this. If A compression block depth A extends into the web portion, then we can split this into 2 parts. One part equal to this 2 rectangles, and then one this rectangle. Okay, and we will calculate the total phi mn of this beam equal to phi mn1 plus phi mn2. Phi mn1 will come from this, and phi mn2 will come from this. Phi mn1, for phi mn1, this will be the compression C1 resultant in T1, which will be equal. T1 is equal to C1, and C1 can be now exactly calculated because C1 is equal to 0.85 C prime into this area, these 2 areas. So you can see that these 2 areas basically is equal to the width of this one is equal to, if the total width is BF, then BF minus BW is the area, is the width of these 2 rectangles. Because this will be deducted, BF, on the total BF, if this BW is deducted, then you will get the width of this and this rectangle collectively. Otherwise, the width of this will be BF minus BW divided by 2, BF minus BW divided by 2. So if you multiply them by 2, it will become BF minus BW. What is the depth of this? The depth of this is equal to HF. This is the depth. Depth of this is HF. So this will be 0.85 C prime, BF minus BW into HF. And T1 is equal to ASF So ASF can be very easily calculated because everything in this equation is known except ASF. So ASF can be calculated 0.85 C prime, BF minus BW, HF divided by Fy. And then phi mn can be calculated. Once this ASF is calculated, T1 into L1 phi SFY D minus HF by 2 now. Because this is the compression block resultant is here. This total is HF. This will be D minus HF divided by 2 for phi mn1. For phi mn2 is this rectangular compression block. This will be just like the design of T beam, rectangular beam. T2 is equal to C2. C2 is equal to 0.5 C prime ABW. This is the A, this is A, and this is BW. So it will be ABW. Q2 is equal to ASFY. This is Q2 is equal to ASFY. And ASFY will be equal to 0.85 C prime ABW. Small a can be calculated from this. A is equal to ASFY, 0.85 C prime ABW. Phi mn2 can be calculated from this. Phi SFY D minus A by 2 because this total is A. So half of this will be from this portion to this, from this part to this will be D minus A by 2. This is C. And then we will add up phi mn1
and 5mm2, it will give us total 5mm. We know that 5mm is equal to mu, so 5mm1 plus 5mm2 must be equal to mu. 5mm1 is already known to us, therefore 5mm2 will be equal to mu minus 5mm1. This 5mm1 is already known to us from the ASF equation. 5mm2 will be equal to T2 into L2. So 5mm2 is equal to mu minus 5mm1. AS is equal to mu minus 5mm1 and divide by just like a doubly reinforced beam. So A can be calculated now very easily from trial and success method. This is how the maximum AS maximum can be calculated. AS maximum can be calculated from this equation, these two equations. The equation is slightly different than for the rectangular beam. This is part of the rectangular, 0.27 FC prime divided by 5 BW. This already you know. But ASF shall be added to this ASF. And in this case also ASF will be added to this. This is for 60 KSI, this is for 40 KSI. It's only differences that ASF will be added to the previously derived equation for rectangular beam. Now, this is another example where you are required to design a simply supported T-beam to resist effector positive moment equal to 6,600 inch cube. The beam is 12 inch wide and is having 24 in total depth, including a slab thickness of 3 inches. The center to center and clear length of the beam are 25.5 and 24 feet respectively. The clear spacing between the adjacent beam is 3 feet. FC prime is 3 and Fy is equal to 60 KSI. So this is like this, situation is like this. This is extend like this in this portion, and this is the length between the beam is, the spacing between the beam in this case is 3 feet only. Slab is 3 inch. This is 3 inch. Total depth of the beam is 24 inch. So the web portion will be 24 minus 3, 19 inch. 21 inch. 21 inch, and this will be 3 inch. The total is 24 inch. The length of the beam from support to support is how much? 25.5 feet is center to center, and clear is 24. Clear is 24. Now we will solve this example. Span length center to center is 25.5 from support center to support of other support. Clear is 24 feet. Total depth is 24 inch, and if we assume a 2.5 inch Y bar, so D will be equal to 21.5 inch. BW is 12 inch, slab thickness is 3 inch. First of all, we will calculate BF. BF plus 16 HF, BW plus 16 HF, HF is 3 inch, 12 plus 16 multiplied by 360. BW plus SW, 12 plus 3 into 12 is 48 inch. And BW plus LN divided by 4 is 84 inch. This is the minimum value. This you will pick as BF. And now you can assume small a equal to HF equal to 3 inch. And calculate AS from this. AS comes out to be 6.203 inch. Recalculate small a. Then small a is slightly more than HF. So we will design this beam, which is T-beam. This will be designed as T-beam, so we will call this as true T-beam. T-beam design as true T-beam. Okay. Then we will calculate ASF. ASF from this equation, quantitative 5C prime, BF minus BW, F divided by Fy. HF is slab thickness.
0.85 into 3, 48 is BF, BW is 12, into 3 divided by 60. This is 4.596 square inch. Now in the moment resistance 5-1 provided by ASF is this within 4957.2 inch cube 5-1. The nominal moment resistance 5-2 provided by steel is 5-2 is equal to Mu minus 5-1 is 1742.8 inch cube. This is the remaining. Now we will assume small a again for this remaining portion of the bending moment. So in this case, if you remember, this is just like a rectangular beam. So we will assume small a equal to 0.2d, which comes out to be 4.3 inch. We will calculate AS from this, which is 1.6 square inch. We will recalculate small a. So this comes out to be 3.27 inch. We know that this is within the. We know that this extends into the flange, the web part. So this is 3.27. After we finish our trials, AS comes out to 1.62 square inch. Total AS now is AST is equal to ASF, which is calculated in the previous step, and then AS calculated right now. So this is 4.9 plus 1.6.21 square inch. We'll use 9 number 8 bars, and the total area actually comes out to be 7.2 square inch now. The AS, as I said earlier, that AS minimum can be calculated from the true equation. So this is 0.70 and 0.86. We'll pick up this value for minimum. Maximum will be the value calculated for rectangular beam and ASF. This is for singly 3.48 and ASF is 4.959. So the total area actually is 8.07. And 7.2 is now 9 bars, 9 into 0.8, 7.2 square inch, which is less than AS max and greater than AS minimum. So this is within the range. This is correct. The design capacity can be checked. You can check the design capacity yourself. Is there any question? A bar will be placed like this. Any question? Any question? No, sir. No, sir. There was a class activity in this on slide number 25. So I would like that you start this class activity now and design this beam B1 for positive bending moment of 1764 inch cape and for negative bending moment of 3122 inch cape right now, because everything is known to us. We just need to design and calculate AS. So if you face any problem, I'm here and we can then I can also solve this class activity for you. But if you start solving this yourself, it will be good, because you may face some problems and then we can discuss those problems. So I would now ask you to start this class activity yourself for positive bending moment of 1764 inch cape and 3122 inch cape negative bending moment. First of all, design for positive bending moment and then design for negative bending moment. All data is given to you. If you have any question, you can ask questions. Please try to do this class activity now, and we have still 1 hour to go, and in this 1 hour
We can discuss this class activity. It will clarify some of your concepts which are still unclear. It will also help you preparing yourself for the examination, which is very close now on 25th, most probably. So if you try this example, a class activity, it will be good for you. So please start this class activity, follow the steps that you discussed today by, first of all, designing this beam for positive bending moment of 1764-inch cape. But beam depth is given to you, 24 in total depth is given to you, slab thickness also given to you. The bending moment is also given to you, so you can just start with the assumption of small a equal to 6 inch and then calculate AS and then recalculate A and see whether the beam shall be designed as T or rectangular. Okay, for positive bending moment of 1764, you can calculate AS. And then for the negative bending moment also, for the negative bending moment, there is no need of BF because the flange portion is in tension and the web portion is in compression. And the compression area is BW times small a. So there is no need of this. For beam will be designed as rectangular beam, which means that the steps that we have followed in the previous several lectures for Flexure design will be followed for negative bending moment. This is only positive bending moment where you will consider BF. So I would ask you now to please proceed with the designing of this beam for the given bending moments, and I'm here to help you in this class activity. So please start this class activity and try to complete this today. Okay.
Do you have any question? You started trying this problem or not? Okay, you can solve this problem in this manner. If you want to note down, you can note down this now. I will solve this problem for you. Okay, you prepare yourself. Now start noting down. Okay. As I said earlier, that this is a beam, continuous beam with a positive bending moment and a negative bending moment like this. So the beam must be designed, and the beam is symmetrical, so you have positive bending moment here and negative here, positive here and negative here. So this positive bending moment is same as this. We'll design this beam for positive bending moment and for negative bending moment. What is the value of positive bending moment? $17.64. 17. 64. What is the value of negative bending moment? Negative bending moment. सर वो नहीं देखी सर मैंने. अच्छा, पहले हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, फिर नाप नेगेटिव के लिए भी देख लें. आपने कुछ ट्राई किया? नेगेटिव के लिए 31.22 है सर. आपने कुछ ट्राई किया हुआ है कि ये पॉजिटिव के लिए तो स्टार्ट किया था आपने? पॉजिटिव के लिए सर ES और A कैलकुलेट किया हमने. क्या कैलकुलेट किया है? BF कितना आपके पास आ रहा है? सर BF हमारे पास 87 इंच. ठीक. आपके पास SW कितना है? 12 सर, 12 फीट. 12 फीट है, बिल्कुल ठीक है. और आपके पास LN कितना है? 24 फीट सर. 24 फीट है, बिल्कुल सही है, ठीक है. H कितना है टोटल डेप्थ ऑफ द विंग? 24 इंच है. और D आपने कितना लिया? 21.5 इंच. 21.5 इंच. यस सर. ठीक. अब देखिए, हम सबसे पहले इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं. डिजाइन फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट 1764 इंच के. ठीक है. डिजाइन फॉर MU पॉजिटिव इक्वल टू 1764 इंच के. इसमें पहला स्टेप आपको BF की वैल्यू चाहिए. BF तो BF आप कैसे मालूम करेंगे? BW प्लस 16 HF. ठीक है. तो BW इसका कितना है? BW 15 इंच है. BW 15 इंच है ना? हाँ, BW यस सर. प्लस 16 HF. HF इज 6 इंच. तो 16 ये कितना, ये इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 111 सर. Then you have 15 inch plus SW. SW is 12 feet. 12 multiplied by 12. क्या वैल्यू आ रही है? 159. Third, 15 plus ln divided by 4. 24 divided by 4 into 12. कितनी वैल्यू आ रही है? 87. तो BF कितना आ गया जी? 87 इंच. ठीक है. अब आप कैसे करेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? सर ES और A को कैलकुलेट करना सर. कैसे करेंगे? A कितना ये एज्यूम करेंगे? हम A सर 6 इंच एज्यूम करेंगे. 6 इंच. अच्छा, A आप 6 इंच एज्यूम करें. एज कितना निकल आएगा? सर 1.76 फर्स्ट ट्रायल में सर. 0.9 60 21.5 minus 6 divided by 2.
कितना है 1 पॉइंट? 1.76। अच्छा जी, इससे अब आप दोबारा मालूम करें नेक्स्ट स्टेप में ए मालूम करें आप 1.76 मल्टीप्लाई बाय 60, एफ सी प्राइम 4 है और बी एफ आपके पास 87 इंच है, यस सर। तो स्मॉल ए कितना आ गया जी? 1.53। जी 1.53। 1.53 जरा दोबारा करें। सर 0.369। हाँ बिल्कुल ठीक, 0.36। ठीक है, इसको दोबारा कैलकुलेट करें, आपने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती की है। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लिया आपने? यस सर 0.36। हाँ, अब आप एज दोबारा मालूम करें इस स्मॉल ए के साथ। कैसे मालूम करेंगे? 1764 डिवाइड बाई 0.9, 60, 21.5 माइनस 0.36 डिवाइड बाई 2। अच्छा, क्या वैल्यू जो आ रही है सर 1.53 सर। अच्छा, व्हाट टू बी कंक्लूड फ्रॉम दिस नाउ? इधर जो है हमारा ए स्मॉल ए इज लेस देन 6 इंच, ठीक है ना? तो वी विल डिजाइन दिस एज रेक्टेंगुलर बीम, क्योंकि 0.36 इंच जो है वो फ्लेंज इन स्लैब थिकनेस के अंदर है, तो उसका शेप जो कंप्रेशन ब्लॉक का होगा वो रेक्टेंगुलर आपको नजर आएगा। यानी अगर मैं उसको ड्रा करूं तो ड्रा ये ऐसे होगा, कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ ये इधर 0.36 इंच ऊपर है, तो कंप्रेशन ब्लॉक का शेप रेक्टेंगुलर है ना, और ये 0.36 है, ये 87 इंच है और ये 0.36 इंच है। तो अब आप इसको रेक्टेंगुलर बीम, यानी आप यू कंटिन्यू योर ट्रायल्स नाउ, अब आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रायल कंटिन्यू करें। तो नेक्स्ट एस मालूम करें, यू विल डिजाइन दिस रेक्टेंगुलर। एस कितना आ गया जी? एस 1.53 1 पॉइंट 1.53। 1.53। 1 पॉइंट दोबारा बताएं। 1.53। 1.53 रिकैलकुलेट ए स्मॉल ए। सर 0.310। पॉइंट 0.310। अच्छा, बस सिर्फ एक दफा आप एस मालूम करें दोबारा इससे। सर वही वैल्यू आती है, रिपीट होती है, 1.53 रिपीट होती हाँ, है। 1.53 आ गई, 1.53 स्क्वायर इंच इज योर फाइनल वैल्यू फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब आप एस मैक्स मालूम करें और एस मिनिमम मालूम करें। ग्रेड 60 है, ग्रेड 60 के लिए कौन सी क्वेश्चन आप इस्तेमाल करेंगे? पहले मिनिमम मालूम करें, 200 डिवाइड बाई एफ वाई बी डी। क्या वैल्यू आ रही है? एस मिनिमम 200 डिवाइड बाई एफ वाई।
200 divided by 60,000 into 15 inch into 21.5 इंच, ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट है। कितनी आ रही है वैल्यू? इस तरह से मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, आप देखते रहें। 1.075 आ रहा है। एस मिनिमम के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, लेकिन मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा कह चुका हूँ कि जब तक सी प्राइम की वैल्यू 4500 psi से कम हो तो आपको 200 डिवाइड बाई एफ वाई ज़्यादा वैल्यू देगी, और ये ACI कोड यही कहता है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे। $15 इंच इंटू 21.5 इंच। ये सर 1.075 आता है। 1.075। यस सर। एस मैक्स कैसे मालूम करेंगे? ग्रेड 60 के लिए क्या इक्वेशन है? अगर इक्वेशन आप भूल गए हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन। नहीं सर, याद है सर। याद है ना? ये देखें, ग्रेड 60 के लिए इक्वेशन जो है आपके पास इधर रिटर्न है। ये सर 5.805 आता है। अच्छा, अब आप देखें, इसको मैं इधर करता हूँ। एस मैक्सिमम 0.27 into 4 divided by 60 into 15 into 21.5। अब आप एस इसके साथ चेक करें, एस ठीक आ रहा है हमारा। एस इज विद इन द लिमिट्स। एस मिनिमम एस मैक्सिमम से कम है, एस मिनिमम से ज्यादा है, और एस मैक्सिमम से कम है। ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। दिस इज 5.805। और आपके पास एस की वैल्यू जो आई हुई है वह है 1.53, जो कि एस मिनिमम की वैल्यू 1.075 से ज्यादा है, और 5.805 इंच जो एस मैक्स उससे कम है। अगर हमारे पास एज की वैल्यू एस मिनिमम से कम आ जाए तो हम क्या करेंगे? सर फिर वो कॉन्सेप्ट हम यूज सर करेंगे, मिनिमम यूज करेंगे। फिर मिनिमम यूज करेंगे। अगर एस इफ एस कम्स आउट टू बी लेस देन एस मिनिमम, देन वी विल यूज एस मिनिमम। ओके, and if AS comes out to be more than AS maximum, फिर हम क्या करेंगे? What are the options? डबली रेनफोर्स का कंसेप्ट या डबली रेनफोर्स करेंगे, या हम डेप्थ बढ़ा देंगे। अगर डेप्थ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो बेहतर तरीका ये कि हम डेप्थ बढ़ा दें, लेकिन अगर डेप्थ पे रिस्ट्रिक्शन हो तो फिर हम डबली रेनफोर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब आप ये पॉजिटिव बेंड मूवमेंट के लिए तो खत्म हो गया। आगे आप इसके लिए नंबर ऑफ बार्स की अरेंजमेंट वगैरह तो आप खुद निकाल सकते हैं ना। अगर आप नंबर 6 बार ट्राई करें 0.44 स्क्वायरिंग, तो हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड? सर 4 bars। 4 bars will be required and 4 bars can be placed in one layer। 15 इंच में 4 बार आराम से आ सकते हैं। ठीक है ना? यस सर, यस। तो हम बीम के नीचे के पार्ट में 4 बार्स एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक इसमें डाल देंगे। ठीक ठीक है, सही बात। सही बात है सर, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर कॉलम है तो कॉलम में भी ये कॉलम के ऊपर से ये बार गुजर जाएंगे, एक कॉलम से लेकर बिल्कुल आखिर एंड तक। ये नीचे जो है 4 बार एक सिरे से दूसरे हम लगा देंगे। करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी डिजाइन करते हैं। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है?
नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज 3122 इंच के। अब इसके लिए देखिए कैसे डिजाइन करते हैं। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एम नेगेटिव, इससे हम कैसे स्टार्ट लेंगे? डू वी हैव टू कैलकुलेट बीएफ फॉर दिस और नॉट? हो सर। इसमें बीएफ मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएफ जो है फ्लैंज पोर्शन इसमें टेंशन में है कि कंप्रेशन में है? टेंशन। टेंशन में है। देखिए अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ये दरमियान का कॉलम है, ये कॉलम इस तरह एक्सटेंडेड है नीचे, और ये साइड का कॉलम है, इसके ऊपर बीम है ऐसे, ये कॉलम नीचे तक है। इसका बेंडिंग मोमेंट अगर इसका मैं डिफॉर्म शेप ड्रा करूँ तो डिफॉर्म शेप विल बी लाइक दिस, ये नीचे आएगा इधर, लेकिन उधर इधर ऊपर जाएगा थोड़ा सा। तो इधर इस पोर्शन में मेरे पास टेंशन ऊपर फाइबर में है। टेंशन ऊपर फाइबर का मतलब है कि फ्लैंज टेंशन में है। तो फ्लैंज टेंशन में है तो जब वो कंप्रेशन में नहीं है तो बीएफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो बीम जो नीचे आ रहा है वो हमारा बीम जो आ रहा है, उस बीम का जो पोर्शन है फ्लैंज जो वेब पार्ट है वही उसका बीडब्ल्यू होगा इस केस में। ठीक है ना? यानी ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बीम की तरह होगा। इसका अगर आप एक सेक्शन ले लें तो सेक्शन इस बीम का ऐसे होगा, दिस ऑल पार्ट इज इन टेंशन, ये इधर यहाँ तक टेंशन में है। तो इसको तो हम लेते ही नहीं है कैलकुलेशन में, हम तो सिर्फ स्टील बार इधर लेंगे। कंप्रेशन का एरिया सिर्फ ये है, और ये बीडब्ल्यू है, और ये इसका स्मॉल ए हो जाएगा। तो इसको हम ट्रायल ऐसे करते हैं कि स्मॉल ए हम लेट्स से एज्यूम करते हैं कोई भी वैल्यू, नॉट नेसेसरली चेंज, लेट्स से 4 इंच में एज्यूम करते हैं, एज्यूम और एस मालूम करें। 3122 डिवाइड बाय 0.9 divided by 60, 21.5. What is the value of AS? So 2.96. 2.96 स्क्वायर इंच। आप ए मालूम करें। BW कितना है? 15 इंच। 0.6 आते हैं। जोर से बोलें जरा। 0.6। एनीवन एल्स? किसी और ने किया है? सर 3.48 आता है सर। हाँ 3.48. 3.48 3.48. 3.48 आता है। दोबारा एस मालूम करें। टू 2.92 सर। 2.92 बिल्कुल ठीक है। दोबारा मालूम करें आप स्मॉल ए। स्मॉल ए दोबारा 3.44. 3.44 रिकैलकुलेट। अब ए दोबारा मालूम करें। अब जो वैल्यू आएगी वो दोबारा चेंज नहीं होगी उसके बाद। $2.92. बस ये 2.92 आपकी जो वैल्यू है ये आपकी आ गई एएस नेगेटिव के लिए। 2.92। अब आप एएस मिनिमम एएस मैक्सिमम तो आप पहले मालूम कर चुके हैं ना। अगर आप उसका कंपेयर करें तो दिस वैल्यू इज मोर देन एएस मिनिमम एंड लेस देन एएस मैक्स। ठीक है? Yes, sir.
तो ये डिजाइन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का। इस इन बार्स को हम कैसे प्लेस करेंगे, आप उसकी प्लेसमेंट को देखें। ये कॉलम है, इस कॉलम से आप इस बीम, ये इस कॉलम के ऊपर है, ये कॉलम है नीचे एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। अगर इसको मैं देखूँ ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव बार में नीचे डालूंगा ऐसे, बिल्कुल आखिर तक ले जाऊंगा, ठीक है ना। नेगेटिव बार में किधर डालूंगा, इधर ऊपर डालूंगा, इधर इस पोर्शन में, ठीक है ना। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि हम नेगेटिव बार्स को वैसे तो एक्सटेंड करते हैं तो कम से कम 2 बार ताकि आपके पास ऊपर आ जाएं, फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग द स्टिरअप्स एज वेल एज टू मेक शेप ऑफ द बीम, वरना बीम का शेप नहीं बनेगा इसका। लेकिन हम इस पोर्शन से आगे तकरीबन L/3 ऑफ दिस L/3 ऑन दिस साइड ऑफ द बीम L/3 हम एक्सेस स्टील को काट देते हैं। हाउ मेनी बार्स विल बी रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बार्स हियर, ये तो 4 बार हमने मालूम कर लिया, 4 नंबर 6 बार्स पॉजिटिव में। नेगेटिव में कितने बार्स रिक्वायर्ड होंगे इफ वी यूज द सेम नंबर 6 बार, 2.92 डिवाइड बाई 0.44, कितने बार्स आपको चाहिए? तो 7 बार्स 7 बार्स चाहिए। 4, तो हम ये बार जो हैं, ये आप बीम के शेप देख रहे हैं ना, हम पॉजिटिव बार को तो हमने इधर से लेकर आखिर तक बिल्कुल कर दिया, कंटिन्यूसली हमने प्रोवाइड कर दिया। नेगेटिव बार में हम इस तरह कर सकते हैं कि नेगेटिव बार में 2 बार्स तो हम एंड टू एंड ले जाएं, और बाकी जो 5 बार्स है उनको हम L/3 पे दोनों दरमियान के सपोर्ट से हम काट दें, क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट फिर पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तकरीबन L/3 तक। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट जो है पॉजिटिव में चेंज हो रहा है ना। देखिए, आप देख रहे हैं ना, कि आप देखिए इस पोर्शन में सिर्फ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, यानी इस बीम के अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये पोर्शन जो है इसमें नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, लेकिन बाकी पोर्शन में नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट नहीं है। तो मैं जो ऊपर स्टील डालूंगा ऊपर पोर्शन ऑफ द बीम में, तो उसमें 2 बार्स तो मैं कंटिन्यू लगा दूंगा एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ताकि कम से कम 2 बार्स मेरे ऊपर आ जाएं, ताकि स्ट्रेप्स को होल्ड करने के लिए और बीम का शेप बनाने के लिए कम से कम 2 बार मेरे पास ऊपर हों। लेकिन बाकी 5 बार या जितनी भी मेरे बार्स हैं उसको मैं L/3 पर काट सकता हूँ। L/3 ACI कोड की लिमिट है कि आप L/3 का मतलब बीम लेंथ। अगर इस बीम की लेंथ 24 फुट है तो L/3 कितना बनेगा? 8 फुट एक साइड तो 8 फुट दूसरी साइड पे मैं 5 बार्स जो हैं उसको मैं काट सकता हूँ। आमतौर पे इस फील्ड में इसको एक्स्ट्रा बार्स कहते हैं, यानी 2 बार्स तो आप एक एंड से दूसरे एंड तक जरूर डालेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कितने डालने, तो एक्स्ट्रा इसमें आपने 5 बार डालने हैं, यानी 5 + 2 7 बार इधर हो जाएंगे आपके पास। तो अगर आप इस बीम का कोई लॉन्ग सेक्शन ड्रा करना चाहें, मैं आपको इसका लॉन्ग सेक्शन ड्रा करता हूँ कि लॉन्ग सेक्शन इसका कैसे नजर आएगा। लॉन्ग सेक्शन ये पॉजिटिव बार तो आप एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक बिल्कुल कंटिन्यूसली लगा देंगे दूसरी तरफ। नेगेटिव बार भी आप 2 बार कम से कम लगा देंगे। अगर आप इधर एक सेक्शन ले लें दरमियान में जो कि L/3 से बाय हो, अगर ये 8 फुट हो और ये भी 8 फुट हो, L/3 बल्कि मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि नेगेटिव में आपको ये अच्छा समझ आ जाए। ये L/3 8 फुट इधर और L/3 8 फुट इधर। तो इधर अगर मैं कोई बीम का सेक्शन ले लूँ तो ये ऐसे होगा। There will be 4 bars is positive bars. There will be 7 bars, 5 + 2 bars हम इसे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लैब के अंदर होंगे, स्ट्रेप प्रेशर से होगा।
अच्छा, तो इसमें इधर अगर मैं सेक्शन लूंगा, इधर मुझे ज़रूरत नहीं है 5 बार्स की, तो मैं इसको इससे करता हूँ कि ये नीचे के 2 बार्स इसको मैं काट देता हूँ, इस अगर ये L/3 हो इधर और इधर, इसको मैं कंटिन्यू नहीं करता। तो ये 2 बार नीचे के रो में जो है, अगर ये 2 बार जैसे जा रहे हों तो ये इधर तक सिर्फ आएंगे, 2 बार डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, ये वाले 2 बार ये खत्म हो जाएंगे। और दरमियान के जो 3 बार हैं ये भी खत्म हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 बार मेरे पास रह जाएंगे इधर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर सेक्शन ले लूं तो फिर मुझे पूरे के पूरे 5 बार ऊपर नजर आएंगे, क्योंकि 2 बार नीचे के रो में इधर भी होंगे ये, और फिर 3 बार इधर भी है इस इधर जगह पर, और नीचे 4 बार कंटिन्यू जा रहे हैं। ये बात समझ गए आप लोग? यस सर। क्योंकि इधर मेरे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इस सिर्फ इस जगह तक है, आगे है नहीं, तो मैं इसको खामखा इसमें स्टील फुल लेंथ तक डालूं तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको काट सकते हैं। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव में अलबत्ता हम कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड डालें, और अगर उसमें कर्टेलमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं फिर आपको किसी दूसरे लेक्चर में बता दूंगा उसमें हम कैसे कर्टेल करते हैं। तो आप ये समझ गए कंटिन्यूस बीम का डिज़ाइन। इफ़ यू एनी क्वेश्चन ऑन दिस, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और टी बीम और रेक्टेंगुलर बीम में फ़र्क भी आप समझ गए आज। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज़। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप क्वेश्चन कर लें। Please ask question. कोई क्वेश्चन है आपका? Anything which is not clear to you still? If it is not still clear, you can ask your question, please. No question, sir. No तो question. हमने एक कंटिन्यूस बीम को भी हमने डिजाइन कर दी पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। टी बीम हमने कर लिया। आप इसको देख लें, लेक्चर को दोबारा देख लें, और आपका कोई फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मैं थोड़ा सा लेक्चर में से अहम चीज़ें दोबारा आपको बताता हूँ, बस के बाद फिर ख़त्म करते हैं। आज हमने लेक्चर जो शुरू किया तो हमने शुरू में कहा कि रीइंफोर्स कंक्रीट में जो शेप ऑफ द बीम होते हैं वो टी और एल होते हैं, बिकॉज द स्लैब एंड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली। द स्लैब reinforcement, particularly the strips, are going into the slab, and the slab reinforcement is passing through the beam, and this will make them monolithic, which means that if a beam is subjected to uniformly distributed or point load, then part of the slab will also be acting together with the beam when it bends down, and especially in the positive bending moment, the slab will help the beam in resisting the compression stresses. And for this purpose, whenever beam is designed for positive bending moment, so part of the slab will also be contributing in resisting compression. So we will take advantage of this, which will reduce area of steel for positive bending moment. In the negative bending moment, there is no need because of flanges in tension, so we will be designed as rectangular beam. And there are two situations. If the compression block depth A is less than or equal to slab thickness, then this beam will be designed as rectangular beam. And if then we have BF equations for T beam and L beam. You can calculate BF for T and L beam. Okay, this is situation number 1. This situation number 2, if small a extends into the web, then the shape of the compression block depth will also be T. This will be called as design of T beam is true T beam. First case is very simple. You will calculate, you will assume small a equal to slab thickness, HF, and then do the trials. If AS comes out to be less than HF, then continue the trial, find AS, and compare with AS max and AS minimum. We have seen this in the two examples.
This was the example where we checked small a, we calculate BF, and finally we said that this will be designed as a rectangular beam. We checked AS max and AS minimum. The arrangement. Okay, this design problem we just finished are positive and negative bending moment. The other case where there is a T-beam to be designed as true T-beam, the problem will be resolved into two components. One with this arrangement of two rectangles and the other with the compression block equal to small a. In this case, the compression block is HF. So this total T rectangular block is divided into two parts, as shown in this figure. Phi Mn1 and Phi Mn2 will be calculated. This is ASF. This ASF is directly known to us because HF multiplied by BF. These are not unknowns to us because BF width will be calculated from the equation. HF is the slab thickness. We will know this. So ASF can be directly calculated 0.85 C prime BF minus BW HF divided by HF5, from which Phi Mn1 can be calculated. Phi Mn1 very easily. For Phi Mn2, we will need the trials because small a is not known to us. So we will do trial just like a rectangular beam. And then Phi Mn2 is equal to mu divided mu minus Phi Mn1. Mu is total bending moment, applied bending moment, and Phi Mn1 is the one which is given to it by ASF. So that is already known to. Since it is already known to us, so Phi Mn2 will be equal to mu minus Phi Mn1, and then you can do trials, calculate assume small a equal to 3, 4, or 5 inch, and calculate AS. Then you will total area actually will be equal to AS plus ASF. This is the equation for AS max and AS minimum. So one example where everything is very clearly demonstrated. And then it is the end of this lecture. Okay? Sir? जी please. सर ये एल बीम के भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने टी बीम के लिए पढ़े हैं। बिल्कुल, उसमें सिर्फ फर्क बीएफ का है और कुछ फर्क नहीं है। बीएफ का फर्क है, बीएफ की इक्वेशंस का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। सही है सर, थैंक यू सर। उसके इक्वेशन को याद करने का तरीका ये है, देखें आप अगर सिर्फ टी का याद करें तो एल का फिर इतना मुश्किल नहीं है। टी में इधर है 16 HF, उसमें 6 HF है। टी में इधर है BW प्लस SW, उसमें SW डिवाइड बाई 2 है, और इधर LN बाई 4 है। आप देखें इसकी इक्वेशंस को तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें आपको याद करना इतना मुश्किल नहीं है। ये एल के लिए BW प्लस टी के लिए 16 HF है, एल के लिए 6 है, टी के लिए SW है, एल के लिए SW डिवाइड बाई 2 है, और उधर LN बाई 4 इधर LN बाई 12 है। LN तो सिर्फ ये फर्क है, बाकी एल और टी बीम का डिजाइन में कोई फर्क, सिर्फ BF में फर्क है। सही, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का? सर ये नेगेटिव बेंडिंग के लिए हम जो एस मालूम करते हैं सर, वो पॉजिटिव बेंडिंग सर किस तरह डिफरेंट है सर? जरा जोर से बोलें। सर ये जो नेगेटिव बेंडिंग के लिए हम एस मालूम करते हैं सर, वो पॉजिटिव बेंडिंग सर किस तरह डिफरेंट है सर? उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसलिए वो मैं देखा नहीं। अच्छा, वो तो सिर्फ इस डिफरेंट इस वजह से है कि इस तरह से है कि BF जो है उसमें पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में आप BF को कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि इसमें कंप्रेशन फ्लेंज के अंदर यानी स्लैब के अंदर है, जबकि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट में कंप्रेशन है आपके वेब के अंदर है, तो उसमें BF आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ BW इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। ठीक है सर। इसमें जो हमने किया ना, तो BW हमारे पास 15 इंच था, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के केस में हमने उसी BW को इस्तेमाल किया 15 इंच को। जिस तरह के हम रेक्टेंगुलर बीम डिजाइन करते थे ना, बिल्कुल उस तरह से है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में हम BW को BF से रिप्लेस करते हैं, बस यही फर्क है। और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो रिइंफोर्समेंट हम मालूम करते हैं वो हम बीम के बॉटम में डालेंगे, और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए जो रिइंफोर्समेंट मालूम करेंगे वो बीम के टॉप में यानी स्लैब के अंदर जो पार्ट है ना बीम का, उसमें डालेंगे।
आज की जो लेक्चर है इसकी वो एक बहुत अहम बात जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि जब हम कहते हैं कि बीम की डेप्थ, तो असल में बीम की डेप्थ जो है वो स्लैब के साथ हम काउंट करते हैं, जबकि फील्ड में आमतौर पे लोग बीम की डेप्थ को स्लैब के नीचे वाला हिस्सा समझते हैं। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइन आप लोगों ने देख लिया कि हम स्लैब का पार्ट भी बीम में काउंट करते हैं। ये आपने देख लिया? यस सर, देख लिया। ये बहुत जरूरी बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि जब हम कहते हैं कि बीम की डेप्थ, तो हमारे टेक्निकली उससे मुराद ये होती है कि स्लैब प्लस बीम का जो हैंगिंग पार्ट है। लेकिन आमतौर पे अगर आप किसी कंट्रैक्टर के साथ या मेसन्स के साथ या इस तरह दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे तो वो बीम को सिर्फ उस हिस्सा को बीम समझते हैं जो कि हैंगिंग पार्ट होता है। अगर आप कहते हैं उनको कि मेरी बीम की डेप्थ 24 इंच है, तो वो चीज समझेंगे कि स्लैब के नीचे 24 इंच है। तो इस डिफरेंशिएशन को आप समझने की कोशिश करें और आप इस टर्मिनोलॉजी को भी समझें कि अगर आप कंट्रैक्टर से बात कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे बीम मेरा 18 इंच है स्लैब के नीचे, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन में आपको पता होगा कि ये 24 इंच में ले रहा हूं इसकी टोटल डेप्थ, ठीक है ना। इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। और उसकी वजह ये कि आपका जो स्टिरअप है, तो स्टिरअप आपका स्लैब के अंदर जा रहा होता है। आपने देख लिया वो जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, जिसमें बीम का जो स्टिरअप है वो स्लैब के अंदर तक जा रहा होता है और वो स्लैब के जो 6 इंच पार्ट है उसमें काफी ऊपर तक जाके हम रिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सर मुझे इसकी आप कोई ये लैब बताएं। होगी सर आगे? जी? सर लैब हमें प्रैक्टिकली सर अगर हमें बताया जाए कि मतलब किस तरह हम इन्फोर्समेंट बीम के अंदर डालेंगे वगैरह, कोई प्रैक्टिकल लैब होगी सर आगे हमारी? प्रैक्टिकल लैब नहीं, मैंने आपको जो पिक्चर्स आपके साथ एनिमेशन शेयर किया, उस एनिमेशन को आप जरा दोबारा देख लें, आप समझ जाएंगे अब। ओके सर, सही है, ठीक। वो एनिमेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, वो आप जरा देख लें। और नेट पे भी बहुत ज्यादा वीडियोज अवेलेबल हैं। मेरे पास एक पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो भी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सच कोई इतनी जरूरत नहीं है, आपको ये आसानी से समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हम किस जगह पर डालेंगे बीम में? सर नेगेटिव तो हम टॉप पार्ट पे डालते हैं। और वो स्लैब के अंदर होगा ना, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये जरूरी है कि आप समझ जाएं कि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बीम की हम स्लैब मतलब अगर इसमें इस पिक्चर में जो मेरे पास इस वक्त आपको अवेलेबल है, विजिबल है, तो ये मैं इधर डालूंगा स्लैब के अंदर, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? यस सर, समझ रहा हूँ सर, ऊपर टॉप पे बिल्कुल स्लैब ऊपर टॉप पे होगा, ठीक है। मेरे पास प्रैक्टिकली वीडियोस भी हैं, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स की भी हैं, और नेट पे भी बेतहाशा वीडियोस हैं, आप आराम से देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किस तरह होती है। और मैं भी देखता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई वीडियो दिखा दूंगा, जिसमें आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके सर, सही। I hope this is clear to you. If you're still unclear, you can ask your question next time. Thank you very much. Allah Hafiz. थैंक यू सर।